हेलो स्टूडेंट्स, चैनल यू पर्ल में आपका स्वागत है। यू पर्ल मीन्स पर्ल ऑफ नॉलेज, ज्ञान की मोती। और आज इसमें पर्ल है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आज का पर्ल है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आज हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। There are basically two modes of nutrition: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Auto means self, trophic means organism. The organisms who can make their food own are called autotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition, hetero means others, trophic means organism. The organism who directly or indirectly depend on others, as for example all animals and non-green plant. And the examples of autotrophic nutrition: all green plants and cyanobacteria, which is also known as the blue-green algae. There are two types of autotrophic nutrition: photoautotrophic nutrition and chemoautotrophic nutrition. Now we will know about the photoautotrophic nutrition and chemoautotrophic nutrition one by one. Autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition are of two types, as photoautotrophic nutrition and chemoautotrophic nutrition. In photoautotrophic nutrition, the organisms make their food with the help of light, as for example all green plants and cyanobacteria, as blue-green algae. Cyanobacteria is also known as the blue-green algae. In chemoautotrophic nutrition, they synthesize their food with the help of chemicals. The synthesis of food takes place here with the help of chemicals, as for example nitrifying bacteria, which are known as the nitrosomonas, and purple sulfur bacteria. They are present in waterfall. And Theophylus bacteria, which breaks hydrogen sulfide into sulfur and water contents. And energy stored is released for future use and basic cell functioning. Energy stored is released for future use and basic cell functioning. So these are the photoautotrophic nutrition and chemoautotrophic nutrition. Now we will study about the heterotrophic nutrition. स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। They are basically three types. Heterotrophic nutrition are basically three types: saprophytic mode of nutrition, parasitic mode of nutrition, and holozoic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition तीन तरह के होते हैं। एक पहला saprophytic mode of nutrition, parasitic mode of nutrition और holozoic mode of nutrition. First we will talk about the saprophytic mode of nutrition. What is saprophytic mode of nutrition? The organisms who do the saprophytic mode of nutrition are called saprophytes or saprotrophs. जो भी ऑर्गेनिज्म सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उन्हें सेप्रोफाइट्स या सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं. दे डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. They decompose dead and decaying organic matter into simple with the help of hydrolytic enzyme and absorb it. In this way, they take their nutrition. As they convert organic molecules into simple inorganic molecules, so they are also called decomposer. As for example, bacteria and fungi. I told you green plants are called producer and they convert
inorganic substances into organic substances. Inorganic substances, they take carbon dioxide, water, and after synthesis they convert it into organic molecules, that is glucose or carbohydrate. Just reverse decomposer break down organic substances into inorganic substances, so they are called decomposer. Now we will know about the parasitic mode of nutrition. We have already studied about the saprophytic mode of nutrition. Now parasitic mode of nutrition. In the parasitic mode of nutrition, the organisms who are called parasites depend on other organisms. Who depend on other organisms are called parasites. And the other organism called hosts for their nutrition. In this parasitic mode of nutrition, the organisms who are called parasite depend on other organisms called hosts for their nutrition. वो न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं. जो डिपेंड होते हैं उन्हें कहते हैं पैरासाइट, और जिस पर डिपेंड होते हैं, जिनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें कहते हैं होस्ट. इसमें दो तरह के पैरासाइटिक प्लांट और एनिमल होते हैं. एक टोटल पैरासाइट जो फुल्ली डिपेंड होते हैं, और एक जो पार्शियल पैरासाइट्स होते हैं, थोड़ी देर के लिए वो डिपेंड होते हैं. टोटल पैरासाइटिक प्लांट में एग्जाम्पल कस्कूटा, ऑल्सो कॉल्ड डॉडर. ये अमरवेल के नाम से लोकल भाषा में जाना जाता है. अमरवेल एक पीली रस्सी टाइप की पेड़ से लिपटी, बड़े बड़े पेड़ से लिपटी होती है, जिसे कि अमरवेल कहते हैं, and known as the Cuscuta or Dodder. Total parasitic animal. Total parasitic animal, roundworm, plasmodium called malaria parasite. ये दोनों जो है टोटल पैरासाइटिक एनिमल में आते हैं, और डॉडर और कस्कुटा टोटल पैरासाइटिक प्लांट में आते हैं. पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट विस्कम एल्बम एंड मिसल्टो इन लोरेंथस. लोरेंथस में ग्रुप में मिसल्टो आते हैं, वो जो है सो पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट में विस्कम एल्बम एंड मिसल्टो. और पार्शियल पैरासाइटिक एनिमल में आपका लीच और बेडबग ये आ जाएगा. तो ये हो गया पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमने जाना टोटल पैरासाइटिक प्लांट, टोटल पैरासाइटिक एनिमल, पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट और पार्शियल पैरासाइटिक एनिमल के बारे में. हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जान रहे हैं. जैसा कि मैंने पहले बताया कि दे आर बेसिकली 3 टाइप्स: सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन and holozoic mode of nutrition. We have already studied about the saprophytic mode of nutrition and parasitic mode of nutrition. Now holozoic mode of nutrition. In holozoic mode of nutrition, organism take solid and complex food from environment and they convert it into simple food with the help of digestive enzyme so that body can absorb and utilize it. Body can absorb and utilize it. As for example, amoeba and human being. Amoeba and human being, इन दोनों में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही होता है, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म सिंपल और सॉलिड एंड कम्प्लेक्स फूड लेते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम के मदद से उन्हें सिंपल फूड में कन्वर्ट कर सकते, ताकि बॉडी शरीर उनका को एब्जॉर्ब कर सके उनको और यूटिलाइज कर सके फॉर मेटाबॉलिक फंक्शंस. Beside this mode of nutrition, there are other 2 mode of nutrition. That is the symbiotic mode of nutrition. In this mode of nutrition, 2 organisms live together. This process is called symbiosis or mutualism. This process is called symbiosis or mutualism. In this mode of nutrition, 2 organisms live together and both are benefited to each other. दोनों एक दूसरे से के मदद से अपना जो है सो लाइफ सर्वाइव करते हैं.
two different organisms live together, share shelter and nutrients as lichens. An alga and a fungus live together. In lichens, alga and a fungus live together. Other type of nutrition is called insectivorous plant. In insectivorous plant, they are also called carnivorous plant. Insectivorous plant are also called carnivorous plant. Any plant adapted for capturing and digesting insects and other animals are called insectivorous plant. फिर रिपीट करती हूँ, any plant adapted for capturing and digesting insects and other animals are called insectivorous plant. As for example, pitcher plant and Venus flytrap. Even though Venus flytrap and pitcher plants are green plants, they cannot perform photosynthesis because they grow in a soil which is poor in nutrients. Therefore, to obtain nutrition, they feed on insects. इसीलिए इन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है. इंसेक्ट या पीचर में इनका डाइजेस्टिव एंजाइम होता है और कैप्चर करने के बाद उस डाइजेस्टिव एंजाइम के मदद से ये इन्हें डाइजेस्ट करके अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने जाना मोड ऑफ न्यूट्रिशन. देयर आर बेसिकली 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज सेप्रोफाइटिक, parasitic mode of nutrition and holozoic mode of nutrition. Besides this, there are 2 other ways of mode of nutrition which are known as the symbiotic mode of nutrition and insectivorous plants. ये वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. फिर हम नेक्स्ट पार्ट में अदर टॉपिक पर बात करेंगे.